बॉक्स में लिखेंगे कि आप what is the problem you are suffering from, maybe months, years or days, and we are not finding any solution, yes or no? Okay, I'm having no worries. If you're having any system issue, then you can keep your cameras off. Okay, slip disc. So this is one of the problems, slip disc. What else? और कुछ तकलीफें जिसके बारे में आप लोग बात करना चाहते हैं? मस्कुलर पेन, ज्योति मैम राइट्स. एनीबडी एल्स? और किस किस तरह का न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स है? लेट्स गेट टू नो फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स. साइटिका, ओके, आता जाता रहता है. कुछ साइटिका पेन ऐसे होता है, sometimes in the hip region, sometimes in the leg region. Okay, but we don't know what is diabetic foot neural pain, cramps. Okay, anything else? Any nervous system related issues? A vascular chronic pain, rheumatic arthritis, knee pain, and so the list goes on and on. Yes or no? Endless है ये list, और एज ग्रुप भी कोई नहीं है. yes or no? आज के टाइम में कोई एज ग्रुप नहीं है. as young as 25 is also suffering from some or the other joint related problem. Does everybody agree with me? yes or no? तो क्या रीजन है? what is the reason for these changing times when we are seeing the frequency of these joint related pain even in youngsters? पहले पोस्ट रिटायरमेंट लोग ये झेलते थे. आज आप यंगस्टर्स में देखेंगे तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास बेस्ट ऑफ फूड है, बट वी आर सफरिंग. सो व्हाट इज द रीजन? एनीबडी? क्या कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में लिख के, व्हाट इज द रीजन for so much of suffering and we are clueless as to how to find a solution? Yes or no? Stress, lifestyle and stress. Okay, wrong posture. Okay, so we have a couple of answers which is definitely right. Food, lifestyle. Okay, तो हमें क्या solution चाहिए इससे बाहर निकलने को? Are we looking for some natural solution to get out of it? Yes or no? कितने लोगों को यहाँ पर solution चाहिए? वो थक गए हैं, खोजते खोजते solution. कुछ दवाई पड़ती है, ठीक होता है, side effect अलग पालना पड़ता है. So how many of us are looking for some natural solution जिसका कोई intervention externally नहीं होगा? आप सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी पे खुद से काम करेंगे. So how many of you all are eager to know what Ashtaang Chikitsa is all about? Okay, so couple of participants out of 103, more answers would be required. सब लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर ले जो लोग ने अभी ज्वाइन किया है. Everybody sit straight, vertically straight. आप लोग सब आराम से बैठ जाएं अपने जगह पे ताकि आप ये अष्टांग चिकित्सा वेबिनार सुन पाए. And people who have already decided to take charge of their neuromuscular health, I have something in store for them. So how many of you all are giving me permission to share my screen? Just 2 minutes of your screen time. Can you give it to me? Yes or no? Okay, thank you so much. Just 2 minutes and I'll be sharing the screen. Anil ji, can you see the screen? No, it's not visible. Okay, just a second. Yes, it's visible now. So Ashtaang
online therapy for Neuro Musculoskeletal problems. हम सब आज शाम को इकट्ठा हुए हैं अष्टांग चिकित्सा ऑनलाइन थेरेपी के बारे में जानने के लिए. So namaskar, I welcome you all to Ashtang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra. मेरा नाम रचना बोथरा है और आज शाम की होस्ट हूँ मैं. I'm your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems. जिससे आप या कोई आपके फैमिली में सफर कर रहा है और कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है. So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbak yogi. Swami Raj Vibhu has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtang Chikitsa to address the structural issues of a human being. So what do we mean when we say structural issues of a human being? तो उसका मतलब होता है musculoskeletal system is one of them. When we say structure of the human body, तो musculoskeletal system उनमें से एक है. So how the structure of the human body can function in its best possible way, ये हम लोग Avisa Healing and Fitness में हमारा purpose है. It's a profound way of addressing the various aspects of a human body. अब ये वेबिनार किसके लिए है? आखिर ये वेबिनार है किसके लिए? For people who are tired of temporary treatments, though is every day taking medicines and are tired of it and are looking for some natural and permanent solution. कि हमें रोज सुबह उठ के दवाई नहीं खानी पड़े. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtang Chikitsa. तो आई एम श्योर हम जितने लोग यहाँ पर वेबिनार अटेंड कर रहे हैं सबको मुक्ति चाहिए पेन एंड मेडिसिन से. So balancing of body at 8 levels. कौन सा है ये 8 सॉफ्टवेयर जो हमारे शरीर का पार्ट है? सृष्टि शरीर, गर्भ शरीर, दोष शरीर, मर्म शरीर, प्रमाण शरीर, संख्य शरीर, प्रकृति शरीर एंड विकृति शरीर. आई एम श्योर आप लोगों को लग रहा होगा ये 8 शरीर आखिर है क्या. सो इसके बारे में डिटेल्स आपको हमारे स्वामी राज विभू जी डिटेल्स में वीडियो से बताएंगे. मेनली जो हम कवर करते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में वो है प्रकृति और विकृति शरीर. सो क्या होता है ये प्रकृति और विकृति शरीर आखिर? So when we come to a certain age, the body gets into degeneration. So degeneration जब होता है उसको हम लोग प्रकृति शरीर कहलाता है. विकृति यानी कि रीजेनरेशन. तो अभी होता क्या है जब degeneration is faster than the regeneration, तो आपको pain, stiffness, inflammation दिखता है. So what we do at Ashtang Chikitsa, we try to expedite the regeneration process. क्योंकि degeneration अपने हाथ में नहीं होता है, वो human cycle में होना ही है degeneration as we age. So as some people did mention in the chat box what they are suffering from, we at Ashtang Chikitsa are trying to heal some of the problems. Of course, the list is not exhaustive. There are a lot of other problems as well, but we are mainly
फोकसिंग ऑन जो रोजमर्रा की लाइफ में लोगों को प्रॉब्लम्स, knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine related issues, slip disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, drooping shoulder, tennis elbow, rheumatic arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, and the nerve issues. So let's hear from Swami Raj Vibhuji what Ashtang Chikitsa is all about, और जो 8 सॉफ्टवेयर हमारे बॉडी में है वो क्या है आखिर, और आप कैसे अपने बॉडी में जो पेन है, स्टिफनेस है, आप खुद इसको हटा सकते हैं बाय नेचुरल मेथड्स. Thank you so much for listening to me patiently. I'll just give you the order in which we proceed in the webinar. अभी आप सुनने जा रहे हो स्वामी राज विभू जी का वीडियो ऑन अष्टांग चिकित्सा, आप कैसे अपनी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो. So I would request everybody to take their seat and we will be starting the video shortly. उसके बाद we will be presenting to you a live testimony who has already attended Ashtang Chikitsa and has benefited by it. So she will be talking about her journey. Uske baad we will be telling you the program details, and last but not the least, Swami Raj Vibhuji himself will be coming live to attend to all your questions. So please आप लोग अपना questions chat box में type कर सकते हैं along with your name and number so that we can get back to you. Thank you so much once again. Namaste, and over to Anil ji to share the video. So let's start. Neuro Musculoskeletal problem. We are talking about Neuro Musculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक example से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक knee injury किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होती है. और a sports person who has somehow damaged one knee, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आई. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबॉडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. पीपल आर still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो a part of this human system, but regeneration is not happening properly. Degeneration is happening. दूसरा कारण होगा, now some person goes to a doctor with a swollen knee, inflammation in the knee. लालीपना है उसके घुटने में, inflammation है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो करेगा एक्सरे करा लो,
वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, एंड ही वुड ट्राई टू सी द प्रॉब्लम देयर इटसेल्फ। वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश। बट डू यू नो व्हाई इन्फ्लेमेशन हैपन इन योर बॉडी? व्हाई इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है। If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So, क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So, even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला। So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में? प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, because there is an issue with digestion. Now, Rachana ji said after menopause, osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर brittle हो गई, कमजोर हो गई हैं, porous हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtaang Chikitsa. Now in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस स्केल में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start. Ashtaang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in Kumbak Paddhati, in Kumbak Kalachar or Ayurved Kalachar, in Yoga Kalachar, there is nothing called as mind separately. It's always Sharira. Both body and mind complex is called as Sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example.
ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. ओपन योर माउथ एंड ट्राई टू थिंक. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. एंड जस्ट अ लिटिल बिट इफ यू नो हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. यू जस्ट कैच इट देन एंड देयर. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. सो इज योर एक्शन एंड योर माइंड डिफरेंट? इज योर बॉडी एंड माइंड डिफरेंट? नो, इट इज नॉट डिफरेंट. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as प्रकृति, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikrati. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, सर्टेन एज, दे वेयर ऑफ. दिस इज वेयरिंग ऑफ इज कॉल्ड एज विकृति एंड प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रकृति. राइट? ये दो चीज हमेशा चल रही है. देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिलीज. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते आप. योर बॉडी डजंट वांट टू. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. You don't take in, you try to exhale more. If you get tired, अगर आप थक जाते हैं, what is tiredness? थकना क्या हुआ? Lot of toxins in the body, isn't it? What do? You do long exhalation. Oof. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे. हमने क्या किया? वातावरण का खराब कर दिया. डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सहेल मोर? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है, it doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more. And correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So
ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to: a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage, ना? You think there will be a damage. What do you do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो. See a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as Kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold, it is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है? तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtaang Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuro Musculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना. Skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. एट मसल्स, एट जॉइंट्स, आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. सो डिसअलाइनमेंट, इफ यू सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट इवन वॉक स्ट्रेट. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. 3 basic disalignment है.
Nabhi, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा है ना? आजकल diabetes बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, लेट्स सी हाउ डू वी बैलेंस. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, होल्ड योर राइट हैंड ओवर द टॉप एंड ट्राई टू पुल इट. खींचने की कोशिश करें. जस्ट पुल ऑन द लेफ्ट साइड. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. व्हेन यू पुल, व्हाट डू यू डू? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ. यस और नो? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtaang Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbak. Now let's go. Let's go to the third part, Pramana. Now, one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, Pramana Sharira, Prakriti, Vikrati, Sankhya, Pramana. चौथे पे आ गए हम, Pramana. Pramana means density. इसका मतलब होता है density, गुरुत्व, भार. Density. इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग-अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, योर फैट मसल, वो योर फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स, देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as Sapta Dhatu. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. Rasa, Rakta, Mansa, Med, Asthi, Majja, Shukra. These are 7 densities. ये अलग-अलग भार के tissues हैं. If the density becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, heart, liver, lungs, kidney, ये जितने भी organs हैं ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना?
It has also a relation with liver. What is kidney disease? Or kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, isn't it? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप, बट सांस रोक के by holding the breath, where are you creating the trigger? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं, एफर्ट बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, तो ये भार आप उठाते हैं. सो हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally, your heart rate will increase. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. You start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbak therapy, which is a part of Ashtaang Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you, for youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside.
and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? Aapka heart, aapke muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना? क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, new cellular form, better cellular formation. अगर वो environment ठीक नहीं होगा, तो wrong cellular formation called, and this is called as cancer. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए, if you want to come out of that, then there should be constant rejuvenation of marma. तो इसमें हम marma Ashtaang Chikitsa में, there is a part in Ashtaang Chikitsa, there is a part called as Anganyasa and Marma Vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtaang Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी. Material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called vata, pitta, kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, kapha, pitta, vata.
Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? Movement को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाएं, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. How do you control this movement? By holding your breath in a particular manner. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. Yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it's little temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice Kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So dosha sharir ko, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is Kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do vata pitta kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure. Rejuvenation. If you do Kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about? Spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing Kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, एक lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, उसका marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing Kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started Kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro
origin. So he started Kumbak in 4 to 5 months time. He said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done Kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part or the seventh Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now burst, is now being bursted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I am telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे ग्रेविटी के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know. Notice.
but you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया, आपको कैसा फील होगा? How will you feel in your body and mind? You'll feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle the situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से आप problem में आ गए? That is what we diagnose in Prana Shakti diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do Prana Shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as अंगन्यास. The second one is called as hatha vinyasa. The third one is called as Kumbak therapy. So in 9 weeks you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtaang Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikrati, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you will not get a magic pill. कोई ये मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important. Wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गई.
आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए, जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड यूल सी योर हेल्थ विल इंप्रूव. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. Now I would like to invite Rama ma'am. Rama ma'am, are you there? Rama ma'am, are you there? Premlata ma'am, are you there? Premlata ma'am, can you switch on your video, and if you could share your journey of Ashtaang Chikitsa with the participants, it would be great. Rama ma'am is already there. I can't place Rama ma'am. Premlata Oh, ma'am is here. she's on spotlight. Okay, she's on spotlight. Okay. Okay, Rama ma'am, over to you if you could share. Yes, ma'am. जब से मैंने ये अष्टांग योग चिकित्सा ज्वाइन किया है, तो तब से मेरी सभी बॉडी प्रॉब्लम्स मैक्सिमम सॉल्व हुई. मैं आप सबसे यही कहूंगी कि आप पेशेंटली और डेडिकेटली एंड कंटिन्यूसली ये सब क्रियाएं करें, ताकि आप सब स्वस्थ हों. और सबको यही एक एडवाइस है कि प्लीज पेशेंटली करें, आराम से करें, ताकि आपको फायदा हो इन सब का और आप स्वस्थ हों. यही प्रार्थना है. Thank you so much, Rama ma'am. Premlata ma'am, are you there? Would you like to share a few words? Okay, I think she is. करके मैं बहुत खुश हूँ. 2 हफ्ते में मेरा नी पेन सही हो गया, जो कि 3 साल से हमको कंटिन्यू था, और थोड़ा कमर दर्द भी हमारा ठीक हुआ है. हमको बहुत खुशी हुई कि हमको कुछ नया सीखने को मिला. इतना अच्छा हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं जितना अच्छा आपने सिखाया. तो हमारे सारे ग्रुप एडमिन्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इतनी अच्छी कुंभक थेरेपी सीखने को मिली. बहुत अच्छा लगा. आपकी थेरेपी से सब लोग स्वस्थ रहे, यही तो हम चाहते हैं. तो हम सभी से बोलते कि देखो हमारा नी पेन बिल्कुल ठीक हो गया, मेरा बिल्कुल ठीक हो गया, सबसे ऐसे ही बोलते. Thank you so much, Premlata ma'am, और स्वस्थ रहिए, and thank you for joining us for the webinar. So over to Anil ji to share the program details. Yes, just give me 2 seconds and I'll share my screen. रचना जी, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपका स्क्रीन. Okay. Okay, so what most of you must be waiting for about the details of the program, the dates and everything. So we'll go through this very fast and we'll share all these details in the WhatsApp group as well as in the chat also. It's a guided program conducted online by trained Kumbhak mentors. This is not something that you watch a video and do it. This has to be done under expert guidance only. Like Swami already told you, there are 3 modules: module 1, module 2, module 3, or you can call them Vat, Pitta and Kapha.
Balancing of all three factors. Duration of each module is 21 days or 3 weeks. So total duration is 63 days or 9 weeks. Now here I've written 9 plus 1 is equal to 10 weeks. Why this 1 week is extra? You'll come to know in a short while. There'll be 2 live classes every week, out of which one will be the learning class and one will be the mentoring or the practice class. And you will get access to all videos and written instructions. So even if you miss any class, you don't have to worry about it. What are the next steps? You pay the program fee, and we have a very special webinar pricing for people who are attending. And then you fill the participant onboarding form, wherein we create login credentials for you to get your course access, where all the recordings will be stored. And then you start attending your classes, starting with module 1 or the VAT module, then M2 and ultimately M3 also. Total classes in module 1 will be 6 classes, 3 learning or 3 main classes plus 3 mentoring or 3 practice classes. Same for M2 and same for module 3 also. So total classes would be 18. 18 would be the learning classes plus 2 customization classes. What is this customization? We'll talk about it in a short while. And there will be 2 Q&A classes live with Swamiji. So total classes that you'll be getting is 22. And the engagement is 10 weeks. 9 weeks for the learning classes, 1 week for the customized kriyas that you'll be getting. Class start date for the 80th batch. We'll be starting the 80th batch this Monday, which is 16th May at 6 p.m. When module 1 completes, module 2 will start on 7th June. After this, module 3 will start on 29th June at 6 p.m. Ultimately, you will be completing all 3 modules one by one. Mentor classes or the practice classes. For module 1, mentor classes are on Thursdays. For module 2, mentor classes on Fridays. Time remains the same, 6 p.m. The only thing is the day changing. For module 3, mentor classes will be on Saturdays. What is the class experience like? These are live sessions where mentors watch all the participants. A lot of people ask us, a lot of participants ask us that how you'll manage in the Zoom session. Is it possible to learn online? See, this is the 80th batch that will be starting. And we've got more than 700 participants in the previous batches. So that's our expertise. Although we are used to a face-to-face communication or a face-to-face interaction, but we perfected this therapy to teach online so that we are able to help a lot of people. You don't have to go anywhere. You just remain in your house and do the kriyas. There will be written instructions in English and Hindi, and there will be session recordings. All the classes are recorded. So those will be available to you after the classes. There will be a lot of extra things that we shared with you. There will be a lot of mental practices, unique diet perspective will be shared. Mind you, this is not a diet plan. This is a diet perspective, which means that how you can use food to support your body so that it does not harm your body, how to cook, and all these perspectives will be provided to you through a video by Swamiji. There will be simple detox processes, and a lot of knowledge will be shared in the classes apart from your main kriyas and movements. Now, before I announce the program fee, let's just have a look at the kind of expenses we could be doing yearly just to manage the problem that we are in. Why this is important? Because we need to understand where our money is going and are we getting benefited for the kind of money we are spending. So I've written here doctor fee, you could be paying anywhere between 6,000 to 12,000 yearly, just in the form of doctor's fee. If you're into physiotherapy, you could be spending another 12,000 to 30,000, depending on the city where you live. And if you're taking medicine, which a lot of you must be doing, you could be spending 15,000 to 30,000 every year. So if you total all these,
33,000 to 72,000 could be spent every year just to maintain the problem or the disease that you're in. It's not a solution. Most of the therapies are about managing the disease, not curing. And we all know about the side effects of allopathic treatments if you into allopathy. Now, before that, there's another thing that we'd like to share with you. It's important who this program is not for, so that it becomes very clear who this program is for. This program is not for people who are looking for a magic pill and want results tomorrow only. See, we are so used to using allopathy. You pop a pill and you get relief instantly or after just 10, 15 or 30 minutes. This is not it. This therapy is not about this. So this is not for people if you're looking for some kind of a medicine. The aim of this program is to get you out of medicine, not into it. And this is not for people who are not ready to work on their body, because this is all about taking responsibility or taking your health in your own hands, not depending on someone else, and and that too through temporary solutions. This is a permanent kind of a program, so you need to work on your body. And it's not for who cannot invest 60 to 70 minutes every day on themselves. This is very important. The money that you will be investing is just peanuts, but the time that you would be investing in yourself, on your health, on your body is 60 to 70 minutes every day. We get many participants who tell that no, they can't spend this kind of a money, but still they'll want to get out of it. So this is not for anyone who's not willing to spend this kind of money, this kind of time on their health. And this is for not who are impatient. The problems that you are into, they haven't come overnight and they won't go overnight also. So you need to be patient. Yes, you are in pain. You have a lot of issues, but still patience is needed. And this is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. I'd like to stop here and discuss this point a bit, because there's nothing free in this world. Either you pay with your time or you pay with your money. And if a lot of people, I come across a lot of people because I talk to them after the webinar also. They just come to get some tips. They'll pick some tips from here. They'll go to another webinar. They'll pick some tips from there, and they'll try to do, the therapy themselves. But any therapy does not work on tips. And for that matter, anything in life does not work on tips. You need to have a holistic view, and there has to be someone guiding you at every step of your treatment. So this I wanted to get very clear. Now, what all you get in the therapy? Prana Shakti diagnosis for root cause determination. This is key. See, if you can find the root cause of the problem, then a solution is possible. If you cannot know the root cause, if you don't know what's causing the problem, so most of the therapies, they do not know what's causing the problem. They're treating the symptom. So this Prana Shakti diagnosis helps determine the root cause or the reason why you got into problem. And if you paid attention in the webinar, Swami said which force out of those 84 forces has become weak, due to which you landed into your current health issue. This alone could be worth the total cost of the program, just the Prana Shakti diagnosis, because nobody is finding the root cause. They're just treating the symptoms, that's all. Weekly, there'll be one main class of 60 to 90 minutes duration, and there'll be practice class of 60 to 90 minutes duration. Online course access for 1 year. Like I already told you, you'll get recordings of all the classes, and these recordings will remain with you for complete 1 year. There'll be a login ID and password which we provide to all the participants, so that you can access those video recordings as well as download the written instructions. Videos of all kriyas done in the class. How this is different from the class recording? In the class, the whole class is recorded, whatever the duration, 60, 90 minutes, the whole class is recorded. But these videos of all the kriyas, there'll be kriyas, and separate small videos of all these kriyas will be provided, so that you don't waste any time just watching all the full 90 minutes video just to look at a
2-minute Kriya. So these Kriyas videos are provided separately also. Written instructions which you can download, take a printout and learn from these, because some people like to learn from a video, some people like to have written instruction. Whatever your choices, you can go with that. We provide both. Then there's a private WhatsApp group to ask doubts, questions 7 days. This is very important. See, after you enroll, you will be entered into a class WhatsApp group. This will be your home for the next 10 weeks. This is the place where all the communication regarding your therapy, regarding the meeting links, regarding your doubts, because 2 days of the week you'll be live with us, but on the remaining 5 days when you're practicing alone, and if you have any doubt that time, where do you go? You ask in this group. Our mentors are here. They'll be answering you. If there's a need, they'll be calling you also. So this is very important. This is where you get all the support. Then individual participant progress tracking. We track each individual's progress. You get a form. You get to fill a form daily, and in that you mention what went well, how you're feeling. If you're facing any issues, so all this thing we track on a daily basis. This is very important because we don't leave you alone. Because a lot of people, they don't have self-discipline. If you leave you alone, you may land into a problem. So this is very important for us and for you too. Therapy customization for each participant in the 10th week. If many of you are thinking, or most of you are thinking that if everybody has a different problem, why the 9 weeks is the same for everybody? See, this 9 weeks is to prepare your body to receive this customization, and customization is based on the Prana Shakti diagnosis. Remember the first point that I mentioned? There's a Prana Shakti, there's a diagnosis, it's a non-medical diagnosis. Based on that diagnosis, your therapy or your kriyas will be customized as per your system, as per your health issues. And after that, you have to continue doing all those customized kriyas. And this will be different for different people. So that's how different people with different problems, that's how their problems will be addressed through the customization. And then 10th point is old students group. We keep in touch even after the program is over. What does it mean? After the 10 weeks, you'll be shifted from the class group to the old students group, which means that you'll still be able to ask questions, your doubts and everything. And this is lifetime. And this is the only program which offers support to its participants, even after the program is over. This is very important. So all these 10 benefits that you get along with this, now what most of you must be waiting for. The program fee for Ashtaang Chikitsa is 9,500. But like I said, there's a very special pricing for the webinar attendees who are still here. So let's get to the pricing. Just 5,500 for the complete program that involves the Prana Shakti diagnosis, therapy customization. And like I said, just the cost of the diagnosis could be worth the whole cost of the program, just 5,500, because there are not many treatments which arrive or which determine the root cause, what's causing the problem, what started it or the disease inside your body. And this is a limited time offer. This is valid till 14th May till 12:30 p.m. and 10 weeks program, 22 classes. I've done a little math here. Just it will be fun to calculate. If you divide 5,500 by 22 classes, it comes to just 250 rupees per class, plus all the 10 benefits that you get, your class recordings, lifetime support group, the WhatsApp group, and after in the old student group, everything inclusive. So this has been made so affordable that everyone can, take advantage of this amazing therapy. How to enroll? You pay the program fee, then you post the payment receipt in the WhatsApp group that you're a part of. Then you fill the participant onboarding form, which Neha from our team will be sending you when you make the payment. Then you join the first module and you start attending classes to learn Ashtaang Chikitsa. That's very simple. Payment method we'll share in the WhatsApp group as well as in the chat also. And now I'd like to stop here for a moment and discuss the support or the people that are behind the day-to-day therapy, and they'll be helping you out. We have a complete team here.
the program in itself is wonderful, but if there's no proper support, then any wonderful program could also become bad also. So we know that, and we've taken care of it. That's why we have a full-time team of 9 staff members. We have Rachna Shrival Bothra, she is the host of this program, and she is the program director. Shalini Bhagwat, she is in charge of all the batches and classes, timing, everything. Atul Sharma, one of the senior mentors. Pooja Chopra, another mentor. Rachna Ranjana Swain, another mentor. Then we have Rakhi Chhabra, another mentor. We have a lot of mentors so that we can support all the participants very properly, very nicely. Then we have Neha Upadhyay, she's in charge of enrollments, and she'll be the person you'll be interacting before you start the classes. She'll be sending the details about the payment, about the classes, the date and everything. Anil Chauhan, that's me. I'll be taking your questions in the WhatsApp group after the webinar, because we may not be able to take all the questions live with Swamiji since we have shortage of time. But I'll be answering all your questions after the webinar inside the WhatsApp group. So if your question is not answered here, don't worry, it will still be answered in the WhatsApp group. And then we have Himanshu Reddy, he's the technical person who takes care of all the login IDs, passwords, videos. If your instructions are not downloading, if your video is not playing, if you're not able to log in, he's the person that will be helping you with. So with this, I come to the end of my presentation, and I'll stop my screen sharing here. And Thank you so much, Anilji, for sharing the program details. So we will be taking the question and answer shortly. Swami Raj Vibhuji has joined in. Namaste, Swamiji. Good evening. Okay, so I'll be reading the questions one by one, and you all can raise your hands also shortly. So we will take up the raised hands also. Okay. So May ma'am says, meniscus tear on my knee, grade 3, doctor said to do surgery. See, you need to understand your body in terms of what it has been doing throughout the life. So regeneration is an aspect of the body, which if the regeneration factor is weak, then any kind of tear will not regenerate. Ideally, every tear should regenerate. So in Ashtaang Chikitsa, we are enhancing the regenerative aspect of the body. And thereby, any kind of tear will get healed up. This happens. Now, would you want to go for surgery or not? That is not our take. When your doctor says something, you should decide. But if you improve the regenerative factor, even after surgery, what is the chances that there will not happen any other tear in the body? So you're not addressing why the tear has happened. You should address that. Apart from, even if you want to go for surgery, it's okay, but you must address the problem. Okay, Shuchi ma'am says stiffness and pain in fingers in the morning. Stiffness and pain in fingers in the morning. Now, your metabolism is weak. So whenever you are looking at a problem, you must look behind. Where is it coming from? What is the origin? So if your metabolism is weak, this is what will happen. Because the moment you sleep, what goes down in your body? The metabolic factor goes down. And it is not able to come up. So what is the weak factor? Your metabolism is weak. Or if I go in more technicality, Garipatya Agni, which is associated with the function of liver, spleen, pancreas, gallbladder, those things. So Garipatya Agni is weak. What is the solution? You improve the Garipatya, or you improve the metabolic factor. How will you improve the metabolic factor? Is there a medicine for it? No, there cannot be a medicine for it.
So only if you work on those factors of your body, by doing Kumbhak, we are actually increasing the metabolic factor. We run a program for diabetes also, where we improve the metabolism. People come out of their difficulties like glaucoma, neuropathy, other kind of difficulty in their body. Even though their metabolism is very weak, we improve the metabolism, they come out of many issues. So if you improve your metabolism, you'll see it will go off like a magic. Okay. Deepak sir says disc bulge and spine degeneration, pain sensation extends to legs, unable to sit for longer time. Pain actually has to travel because the nerves get originated from your spine. नसें जो है ना आपकी वो स्पाइन से निकलती है. If your spine is not intact, then first thing what will happen, your disc will be loose. आप पत्थर लीजिए, उसके बीच में छेद करिए और 33-35 पत्थर को आपस में इकट्ठा करके बीच में रस्सी डाल के टाइट कर लीजिए. अगर आप खींच के टाइट नहीं रख पाएंगे तो लूज होंगे ना, वो निकलेंगे, इधर से उधर जाएंगे. दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड. तो देयर इज एन इंटीग्रिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइन को इकट्ठा करके किसने रखा है? दैट इज कॉल्ड एज व्याना. द व्याना एस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग actually takes control of the structure of the body. तो व्याना अगर वीक होगा तो डिस्क बल्ज ऑपरेट कराएंगे, एक जगह कराएंगे दूसरी जगह हो जाएगा, right? And your physicality is not that strong, so if you are put on some kind of an exercise regime, physiotherapy, that will also be little difficult for you. वो भी मुश्किल हो जाएगा. So unless and until you are strong from within, unless and until these factors are strong within, even if you work upon the body, it might show up some difficulty, or it may damage your system. So unless and until you strengthen yourself from within, there is no option. So Vyan ko ठीक करना है. In the program, we teach you something called as Vyana, Kriya, Kumbhak, for the structural issue, for the integrity of your skeletal system, for the integrity of your external body. तो वो तो करना पड़ेगा आपका. And if you do something about your spine, you see the moment your nerves become free, the pain will go away. Pain चला जाएगा क्योंकि नसें सारी स्पाइन से निकल के आ रही. So hatha vinyasa, the second part, you will learn 3 parts: marmanyasa, hatha vinyasa, kumbhak therapy. जो hatha vinyasa है, it is to align your spine and the structure of your body. Right? That's how you will come out of this problem. Okay. Uday Tiwari sir is asking, what is Kumbhak? Can you please explain? What is Kumbhak? Kumbhak basically means hold. Now, hold, how will you further elaborate it? Only a hold can create life in universe. Because universe is also hold. This hold is also called as Kumbhak. This hold is also called a Kumbh. कुंभ मेला मनाते हैं आप? आपके देश में कुंभ मेला होता है? अच्छा, in Indian culture, basically you worship a कलश. आप कलश की पूजा करते हैं, मालूम है आपको? आप कुंभ उपासना करते हैं. So, because it holds life, what is universe? Universe is a kumbh. Because it holds life. जो चीज लाइफ को होल्ड करती है उसी को कुंभ कहा जाता है. कुंभ का ही एक फॉर्म है एलिप्सॉइड, लिंग. व्हाट इज लिंग? लिंग इज आल्सो कुंभ. So now, without kumbhak, without the holding factor, you can't do any action. होगी तभी वो actionable होगा. So any action creating mechanism, action create करने का कोई भी mechanism आपके अंदर है, वो कुंभक के जरिए होता है. आप अपना हाथ भी नहीं हिला सकते कुंभक के बगैर. आप आवाज नहीं निकाल सकते कुंभक के बगैर. You hold certain thing and throw it ना. आप किसी को पकड़ के फेंकते हैं, अपनी आवाज को पकड़ते हैं और फेंकते हैं. आपका वॉइस बॉक्स हवा को, आवाज को क्रिएट करने के लिए एक तरीके से अपने आप को होल्ड कर रहा है. आप जरा जोर लगाइए, आप कुंभक करते हैं पीछे. When you
push something, you do Kumbhak. When you pull something, you hold your breath. When you jump, you hold your breath. You lift weight, you hold your breath. You move your body, you hold your breath. Holding breath is the effort making mechanism of human body. एफर्ट बनाने की जो क्षमता इंसान की है उसी वो कुंभक के जरिए ही है. बिना कुंभक के यू कांट स्पीक, आप आवाज नहीं निकाल सकते. यू कांट फोकस, आप फोकस नहीं कर सकते. यू कांट लिव, यू आर होल्डिंग लाइफ. प्राण को रोक के रखा है आपने, तो आपका एक जीवन एक कुंभक है. तो कुंभक इज फंडामेंटल टू लाइफ क्रिएशन. जीवन के निर्माण में जो मूलभूत आयाम इस्तेमाल होता है उसको कुंभक है. तो सांस रोकना भी कुंभक है, बॉडी को कंट्रोल करना भी कुंभक है, आवाज निकालना भी कुंभक है, फोकस लगाना भी कुंभक है. सो हम इसको बहुत सिंपल टर्म्स में बोल रहे हैं, एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कुंभक. तो कुंभक एफर्ट मेकिंग और रेगुलेटिंग दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हैं. दैट मैकेनिज्म इज कुंभक. आप बिना और भी ये बहुत सिंपल टर्म्स है. कुंभक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, एक बहुत छोटा आयाम है इसका, सांस को रोकना थोड़ा. मगर केवल रोकने की बात नहीं होती, उसको कैसे हम डायरेक्शन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई टॉक इन यूनिट्स. मैं आपको बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल देता हूं. आपके लिवर वीक है, आपका लिवर वीक है, तो उसमें किस तरीके का एफर्ट इस्तेमाल करना है आपको कि लिवर स्ट्रांग हो जाए. तो कौन सा एफर्ट यूज करना है, कौन सा कुंभक यूज करना है. इनहेल फॉर 1 यूनिट, 1 यूनिट का इनहेलेशन करें. होल्ड फॉर 1 यूनिट, 1 यूनिट का होल्ड करें. यूनिट कुछ भी हो सकता है, 5 सेकंड हो सकता है, 3 सेकंड हो सकता है. सो 1 यूनिट इनहेलेशन, 1 यूनिट होल्ड, 4 यूनिट एक्सहेलेशन, एंड इट विल इंपैक्ट योर लिवर. वो लिवर को स्ट्रांग करता जाएगा. किडनी का इश्यू है आपको, 4 यूनिट इनहेलेशन, 4 यूनिट इनहेलेशन, 2 यूनिट होल्ड, 1 यूनिट एक्सहेलेशन, 1 यूनिट होल्ड. अब वो किडनी की तरफ में डायरेक्ट होगा. बट एक बात याद रखिए, समझाने के टर्म्स में तो ये बड़ी आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं और आप लोग अच्छा इस तरीके से तो किडनी ठीक कर देंगे आप. मगर आपका किडनी आपके लिवर के बगैर काम नहीं करता. आपका लिवर आपके हार्ट के बगैर काम नहीं करता. आपका हार्ट आपके नर्वस सिस्टम के बगैर काम नहीं करता. सब एक दूसरे से जुड़े हुए. इसलिए जरूरत इस बात की है कि कौन सा आयाम आपके शरीर का कमजोर हो गया उसको पहले पता लगाया जाए और उसके हिसाब से आपके कुंभक को कस्टमाइज किया जाए. इसीलिए कुंभक थेरेपी फिर बनता है. हम यही कर रहे हैं. कस्टमाइजेशन कैसे कर पा रहे हैं, आपको डायग्नोस कर, प्राण शक्ति डायग्नोसिस. Okay. Anjana ma'am wants to know about knee bone dislocation. Dislocation, knee bone dislocation. Dislocation again is a structural issue. स्ट्रक्चर का इशू है. दूसरी बात, आपके हड्डियों का बंधन इतना मजबूत नहीं है एक जगह पे रहने के लिए, इसलिए डिसलोकेट हो रहा है, वो मूव कर रहा है. इसमें डीजेनरेशन एस्पेक्ट भी साथ में आ सकता है. ठीक है, तो 2 एस्पेक्ट आ गए जिसे हम कहते हैं प्रकृति. रीजनरेशन बढ़ाना पड़ेगा, है ना, जॉइंट का में रीजनरेशन करना पड़ेगा. अगर आप कुंभक करेंगे तो आप रीजनरेट भी कर सकते हैं. जॉइंट में जो घिसावट आ गई है, जो कार्टिलेजेस कम हो गए हैं, उनका रीजनरेशन भी हो सकता है. मगर रीजनरेशन के अलावा वो जो मैंने बताया कि जो आपके हड्डियों को एक ढांचा दे रहा है, जो शक्ति आपके हड्डियों को इकट्ठा रख रही है, जिसे मैंने बताया व्यान पक्ष, वो व्यान पक्ष को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके शरीर में मजबूती आएगी, आपको ज्यादा स्ट्रेंथ फील होगा. डिसलोकेशन की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी, है ना. तो स्ट्रक्चर की इंटीग्रिटी को बढ़ाएंगे, उसकी स्थापना को बढ़ाएंगे तो फिर डिसलोकेशन नहीं होता. स्थापना नहीं बढ़ाएंगे तो सर्जरी करके वापस ठीक कर देंगे तो दूसरी जगह डिसलोकेशन हो जाएगा, फिर डिसलोकेशन. तो डिसलोकेशन की स्ट्रेंथ जिसकी वजह से डिसलोकेट हो रहा है उसको कम कैसे करेंगे आप. इंटीग्रिटी, स्थापना, अगर अपने हड्डियों के ढांचों की स्थापना बढ़ाएंगे तो डिसलोकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं. ये अष्टांग चिकित्सा में हम करते हैं. Abhishek sir talks about I'm facing excessive sweating, also having dark circles. Now I'm diagnosed with slip disc. Can these all problems be cured?
आपके शरीर में 16 स्रोत होते हैं। There are 16 स्रोत in your body. स्रोत का मतलब क्या होता है? चैनल ऑफ मूवमेंट। जैसे इफ यू ईट फूड, इट मूव्स इन योर बॉडी इन अ पर्टिकुलर वे, है ना, डायरेक्शन एंड चैनल। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पुरुषवाह स्रोत। पुरुषवाह स्रोत मतलब द ट्रैवल ऑफ स्वेट। पसीना आपके शरीर में जो ट्रैवल करता है, पुरुषवाह स्रोत। अच्छा, पुरुषवाह स्रोत कब ज्यादा होता है? यू नो व्हेन योर बॉडी गेट्स इनटू मोर हीट सिचुएशन, आपके शरीर के अंदर हीट बढ़ती है, तब बॉडी पसीना निकाल के उसको ठंडा करने की कोशिश करती है। तो अगर बहुत आसानी से समझिए, अगर आपके बॉडी में पित्त विकार आ गया, हीट जनरेट ज्यादा हो रहा है, एक्सेसिव लूज हो रहा है, जनरेट हो रहा है मगर यूटिलाइज नहीं हो रहा, वो बाहर की तरफ में आ रहा है, तो पुरुषवाह स्रोत में एक्सेसिव मूवमेंट चालू हो जाएगा। तो आपके जो पित्त पक्ष को अगर शांत करेंगे तो सडनली आप देखेंगे कि पुरुषवाह स्रोत में जो एक्सेसिवनेस आ गया है वो कम हो जाएगा। नाउ इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स व्हेन द हीट जनरेटेड इज नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली इन योर बॉडी। आपके शरीर में हीट जनरेशन अगर इस्तेमाल नहीं होता तो इट इम्पैक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर बॉडी, अलग अलग आयाम को एस्पेक्ट करता है और उसी को आप फील कर रहे हैं। सो इफ वी करेक्ट दैट, वेयर योर एनर्जी इज नॉट गेटिंग यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली, आपकी ऊर्जा का जो है वो वेस्टेज हो रहा है, अगर उसको हम इस्तेमाल करने के लिए काम में लगा देंगे तो आप देखेंगे आपकी ये सारी प्रॉब्लम सेटल हो जाता है। So Ashtang Chikitsa is all about doing that. Now, unless and until you get to the reason of why something is happening, there is no solution. So diagnosis is really important for that. So we just because of your symptom, I have said certain things, but the moment we make you do certain experiment with your body, we get to know more about it. आपके बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाती है और उसके हिसाब से आपके कुंभक को कस्टमाइज किया या आपके प्रैक्टिसेस को कस्टमाइज किया जा सकता है। Okay, Arvind sir, you can, I have unmuted you. You can ask your question, please. बोलिए नहीं, इस फाइनल का सर, वो मेरा स्पाइन में प्रॉब्लम है, स्पाइन कोड और स्पाइन में भी प्रॉब्लम है, उसमें लंबर स्टेनोसिस है, स्पाइन लंबर स्टेनोसिस। डॉक्टर जो है ऑपरेशन के लिए बोला है। ऑपरेशन से स्टेनोसिस चला जाएगा क्या? स्टेनोसिस होता क्या है? आप जब को आपको कुछ डॉक्टर बताते हैं या आप कुछ उसके बारे में पढ़ते हैं ना, तो उसे अपने समझ के हिसाब से जब तक आप लेके नहीं आएंगे ना, तब तक वो केवल शब्द ही रहेंगे। स्टेनोसिस का मतलब क्या था? हार्ड हो जाना, किसी जगह का स्टिफ हो जाना। अब आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। आप कुंभक करना जब शुरू करते हैं तो आपके शरीर में कई जगह हार्ड स्किन होता है, जैसे कोहनी में या बटक्स पे हार्ड स्किन होता है कई मौका। अगर आप कुंभक करना शुरू करें 2 से 3 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि ये सॉफ्ट हो गया, जहां भी हार्ड स्किन था वो सॉफ्ट हो गया। तो वो सॉफ्ट हुआ क्यों, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। आप और भी बहुत जरा सा में अगर मैं समझाना चाहूं तो वहां पे पानी की मात्रा यानी उदक वाह, इसे कहते हैं, पानी कैरी करने का जो स्रोत है वो लॉक हो गया, वो वहां जा नहीं पा रहा, तो सॉफ्टनेस नहीं आ पा रहा। कोई चीज ब्लॉक हो गई तो हार्ड हो जाएगी, वहां पे हार्ड हो जाएगा। अब आप ब्लॉक होने पे करते क्या? आपने किचन का सिंक ब्लॉक हो गया तो करते क्या? थोड़ा जोर लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, थोड़ा जोर लगाते हैं तो वो खुलता है। अपने शरीर के अंदर थोड़ा जोर लगाएंगे तो ये स्रोत खुल जाएंगे। जब आप कुंभक करेंगे तो ये चैनल्स खुल जाएंगे। 3 हफ्ता बताया, आप देखिए आपके स्किन सॉफ्ट हो जाएगा। करके देखिए, हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे हम जेनेरिक कुंभक डाला हुआ है, आप करिए 3 हफ्ता, देखिए कि अचानक से आपकी बॉडी में सप्पलनेस आ जाएगा, सॉफ्टनेस आ जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर हार्ड आ गया, ऑपरेट करके उसे निकाल लिया जाए तो क्या दोबारा हार्ड नहीं आएगा? होगा, क्योंकि वो टेंडेंसी तो है आपके शरीर में, कहीं और हार्ड हो जाएगा। आपने सॉल्यूशन तो नहीं किया ना,
आपने एक हार्डनेस को केवल स्क्रैप कर दिया, खरोच के निकाल दिया, काट के निकाल दिया, मगर हार्ड होने का जो कारण है उस पर तो कोई काम ही नहीं किया आपने। तो अगर जरूरत पड़े, बहुत जरूरत पड़े तो ऑपरेट करना चाहिए, अदरवाइज आप देखेंगे अपने शरीर को थोड़ा मौका दीजिए, इसको ठीक कीजिए और देखेंगे कि ये उसी हार्डनेस को भी सॉफ्ट कर सकता है, जहां पे हो गया है उसको भी सॉफ्ट कर सकता है। रीढ़ की हड्डी के बारे में मैं बता चुका हूं, व्यान पक्ष हम इस पे काम करेंगे तो रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेंथ आएगा, मजबूती आएगी। दूसरा, जहां पर भी हार्डनेस है वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो इससे आपका वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए जा सकता है। थोड़ा मौका दीजिए अपने शरीर को, ऑपरेट कराना है तो हम रोकेंगे नहीं, आप करा लीजिए, मगर प्रॉब्लम तो सॉल्व करें। Dr. Anita ma'am, you can, I've unmuted you, you can ask your question. स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं पेशे से एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और चित्रकला सिखाना मेरा विषय रहा है। और पिछले 2 साल के कोरोना लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते पोस्चर कहाँ से कहाँ चला गया पता नहीं, तो उसके मारे पीठ में काफी दर्द है और नेक पे हम्प भी आ गया था, और जिसे हम कहते हैं लोअर नेक अपर बैक, और हाथ के कंधों की पूरी मसल्स और हड्डियां का जकड़न। और पिछले 7 महीने से मैं थेरेपी करा रही हूँ, फिजियोथेरेपी, कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ फिजियोथेरेपी है, व्यायाम है जिसमें योग भी शामिल है, जैसे भुजंग आसन है या पेट को अंदर खींच के चलने का आसन है, तो बहुत सारे हैं, प्लैंकिंग करना है। लेकिन रिकवरी अब एक जगह आकर रुक गई है। एपिसोड्स हैं, बार बार मैं फिर से उसी पेन के अंदर चली जाती हूँ, और जब पीठ का दर्द बढ़ जाता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, खाना पानी निगलना मुश्किल हो जाता है मेरा। तो चाहती हूँ कि इससे मुझे छुट्टी मिल जाए। और अभी क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैडम आपको दूसरी कोई तकलीफ है जिसकी वजह से ये एपिसोड आ रहे हैं, तो सोनोग्राफी करने से मालूम हुआ कि फैटी लीवर है। तो अब मैं फिजियोथेरेपी से तंग आ गई, 7 महीने से कर रही हूँ इलाज में, तो मतलब मुझे एक मौका, एक हद तक मैं ठीक हूँ, चलना ठीक से चल पा रही हूँ, ठीक से बैठ पा रही हूँ, लेकिन सोना दूभर है। सुबह उठती हूँ तो मतलब बैम्बू स्टिक होती हूँ मैं, एकदम बैम्बू स्टिक, खड़ा होना मुश्किल है, बिस्तर से उठना मुश्किल है मेरे लिए। तो चाहती हूँ कि अगर यहाँ मुझे आराम मिले तो मैं सच में वो फिजियोथेरेपी छोड़ दूंगी, क्योंकि बहुत हो गया, मतलब अभी ऐसा टॉर्चरस फील हो रहा है मुझे। तो आप बताइए कहाँ तक मैं भरोसा कर सकती हूँ यहाँ पे। आपके पास ऑप्शन क्या है ये बताइए। मैं सभी जगह तो ऑप्शन ढूंढ रही हूँ ना। अभी वहां देखिए मैंने करीब करीब इतने पैसे डाल दिए हैं, इसी उम्मीद से कि बिना मेडिसिन के अगर मेरा वहां कुछ भला हो जाता है तो मैं करा लेती हूँ। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा, मतलब ये चीज बहुत आसानी से ठीक होती है। मैं आपको एक बात सच बताऊं, बहुत आसानी से ये चीज ठीक हो जाती है। द प्रॉब्लम इज कि हमें सही जगह पे देख के उस पर काम करना। पहली बात, आपका शरीर आपको ठीक कर सकता है, बाकी कोई चीज आपको ठीक नहीं कर सकती। केवल और केवल और केवल आपका शरीर ही आपको ठीक कर सकता है। बाहर से सपोर्ट लेके, केमिकल लेके अगर आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें तो उससे शरीर की हालत और खराब हो जाती है। दूसरी चीज, अगर जोर जबरदस्ती करके ठीक करने की, अभी क्या है, जब स्टिफनेस आ जाती है तो आमतौर पे जो रिजीम होता है, लोगों का जो समझ है वो है इसको थोड़ा जोर लगाओ तो वो सॉफ्ट होगा। मगर थोड़ा जोर बाहर से लगा के सॉफ्ट होने पे तकलीफ भी होती है, थोड़ा फायदा हो जाता है, वो भी बात है, मगर वो क्यों जकड़ रहा है, अकड़ रहा है, उस पे आप काम नहीं कर। रीजन क्यों अकड़ रहा है उस पे तो काम आप नहीं कर। किसी को हाँ नहीं, वो अभी अभी पता चला फैटी लीवर है, जिसके मारे ये सारी मुसीबतों का। नहीं नहीं नहीं, गलत डायग्नोसिस है। ओके। मुझे आप बताइए ना फैटी लीवर का, मैं आपको बताऊं फैटी लीवर क्यों है। क्यों है पूछिए ना, फैटी लीवर है।
वो तो आपको स्कैन करके देख लिया, मगर क्यों है वो पूछा आपने, फैटी लिवर क्यों है मुझे? इसका जवाब आइडिया ही है, लोग आइडिया देंगे, इसका जवाब नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपको भी समझ है इतनी, आप खरोंच लीजिए अपने स्किन को, फिर जलन होती है बहुत। तो जलन होती है तो उसको जलन को कम करने के लिए क्या करते हैं? मैं कुछ भी नहीं कर पाती, मैं पानी डालती हूँ तो भी जलन होती है। नहीं नहीं, पानी नहीं डालते, क्योंकि आप गलत सोच रहे हैं। आप थोड़ा घी लगा लो, जलन कम हो जाए। ऑलराइट। ये सभी कोई जानते थे, हमारे देश में सब कोई जानता है। आमतौर पे भी हमको मालूम है, कुछ भी लुब्रिकेटिंग या फिर फैट लगा लो तो जलन बंद हो जाता है। अब आप मुझे बताइए कि आप जो भोजन ले रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना, आपका शरीर उसे एक्सेप्ट नहीं करता ठीक से। आप जो बचपन से आपको दवाइयां दी गई, जब छोटे से पैदा हुए थे तो पता नहीं कितना इम्यूनाइजेशन किया गया था, 24-25 इम्यूनाइजेशन हुआ था। सब केमिकल डाला था एक छोटे से इन्फेंट के ऊपर, केमिकल बॉम्बिंग किया था ना। और फिर आपको मालूम है ना, दर्द होता है तो आखिरी इलाज क्या है, वो दर्द की गोली खाना होता, ठीक है ना। केमिकल बॉम्बिंग करनी होती अपनी जमीन पे। हमने ऐसे ही केमिकल बॉम्बिंग की ना, खाद डाला, पेस्टिसाइड डाला, तो जमीन की उर्वरता खत्म हो गई, खराब हो गई जमीन। अब हमारे पास में बहुत कम जमीन है, उर्वरक जमीन। तो अब क्या कह रहे हैं, जैविक खेती करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग जमीन का तो आप कर लोगे, इस जमीन का कौन करेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको बचपन से आपने केमिकल बॉम्ब डाल के खराब किया। तो जब भी आप मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, पैकेज फूड, जब भी आप केमिकल मेडिकेशन, एलोपैथिक मेडिकेशन जब भी आप डालते हैं अपने शरीर में, तो क्या आपका ये केमिकल बॉम्ब सबसे पहले लिवर को जाके हिट नहीं करता? क्योंकि लिवर गेटकीपर है आपके शरीर का, गेटकीपर के जरिए ही आपके शरीर में कुछ जा सकता है, वो सेकंड ब्रेन है। तो जब भी आप एक गोली खाते हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड खाते हैं या पैकेज फूड खाते हैं जिसमें केमिकल्स होते हैं, तो आपके लिवर को ऐसे ही ना खरोंच होती है, जलन होती है, वो उसको फेंकने की कोशिश करता है। अब बताइए वो अपनी जलन को कैसे ठीक करेगा? वो थोड़ा फैट डालेगा ना अपने ऊपर कि नहीं डालेगा? तो जब वो फैटी होता है तो इसका मतलब क्या, उसको जलन, वो रिस्क में है, वो बचा रहा है अपने आप को, वो बचाता है अपने आप को। तो फैटी लीवर का मतलब क्या है कि लिवर वीक है और वो बचाने की कोशिश कर रहा है अपने। आपके शरीर में एक स्टेरॉइड या उसको हार्मोन बोलिए, वो है कॉर्टिसोल, एंटी स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। आपका शरीर रिस्क में होता है ना, रिस्क से वो बचाता है। वो कॉर्टिसोल कहां से प्रोड्यूस होता है? वो आपके कोलेस्ट्रॉल से बनता है। कोलेस्ट्रॉल से एंटी स्ट्रेस हार्मोन बनता है, फैट से एंटी स्ट्रेस हार्मोन बनता है। तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जब हाई हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके शरीर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, उसको कॉर्टिसोल बनाना है। लेकिन आपका डॉक्टर क्या बोलेगा, अरे ये तो गड़बड़ हो गई, मतलब हमने तो इस शरीर को क्रिमिनल बना दिया है पिछले 50 साल में, ये फीवर करके कोरोना वायरस को मारेगा, आप क्या करोगे, पैरासिटामोल खा के फीवर डाउन कर दो। हम बेचारे शरीर को इतना प्रताड़ित करेंगे। लाखों सालों से प्रॉब्लम नहीं आई इंसानियत को। 100 साल पहले किसी को डायबिटीज नहीं होता था, ब्लड प्रेशर नहीं होता था, थायराइड नहीं होता था। ये हमने क्रिएट किया है ना। 100 साल पहले किसको डायबिटीज होता था? 50 साल पहले भी बहुत कम लोगों में सुना होगा आपने, होता ही नहीं था। तो ये अब बच्चों बच्चों को हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम मैनेज कर रहे हैं। किसको मैनेज किया जाता है? क्रिमिनल को जेलों में मैनेज किया जाता है। हम भी अपने बॉडी को क्रिमिनल बना के उसको एक तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मुझे बताइए, जब तक कि आप सही नहीं करेंगे, और देखिए हम तो साइंस जो है ना, भारतीयों का खून है, इसको फिरंगियों ने चुरा चुरा के ले गए। चुराई हुई चीज हजम नहीं होती और हम उनके गुलाम है आज के टाइम, मानसिक रूप से गुलाम है। उन्होंने पूरी दुनिया बर्बाद कर दी और हमको दिख नहीं रहा। उन्होंने जमीन खराब कर दिया, हमको दिख नहीं रहा। उन्होंने मानव शरीर खराब कर दिया, हमको दिख नहीं रहा। तो इतना तो कोई बेवकूफ नहीं होता कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारे।
और फिर बाद में बोलेंगे कि यार हमको तो कौन जिम्मेदारी लेगा? उसने जो दवाइयां आपने खाई, कौन जिम्मेदारी लेगा अगर आप क्रैश में जाएंगे? आप बुढ़ापे में अगर ठीक से जी नहीं पा रहे तो कौन जिम्मेदार, कौन सी सरकार जिम्मेदारी लेगी? WHO कौन सा जिम्मेदारी लेगा? कोई भी नहीं लेगा। लेकिन उनका प्रोटोकॉल आप जिंदगी भर फॉलो कर रहे हो। दरवाजा खुलते ही एक क्लिनिक है, एक हॉस्पिटल है, उनका प्रोटोकॉल जिंदगी भर फॉलो कर रहे हो आप, जिससे कि आप जिंदगी भर हेल्दी नहीं रह पा रहे, मगर ये देख नहीं रहे। गुरुजी एक छोटा सा करेक्शन है यहाँ। मैं पिछले 15 साल से आयुर्वेद में हूँ। मतलब अगर मुझे कुछ तकलीफ है तो मैं सिर्फ आयुर्वेद के पास डॉक्टर के यहाँ ही जाती हूँ, मैं और कहीं नहीं जाती हूँ। एलोपैथी तो पूरा ही बंद कर चुकी हूँ मैं। आप आयुर्वेदिक भोजन करते हैं क्या? नहीं, आप वो हवा बात कौन सा सही। लेते हैं? आयुर्वेदिक हवा लेते हैं क्या? वो नहीं है। आपके वो जमीन सही, तो खराब हो चुकी है, पानी खराब हो चुका है, उसको कहाँ अवॉइड करोगे आप? सही है, वो वातावरण सही खराब है। कर दिया, उसको कहाँ अवॉइड करोगे आप? नहीं, तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी तो एलोपैथी को कॉपी करने की कोशिश कर रही है। आयुर्वेद भी ओरिजिनली अपने आप को प्रोपेगेट नहीं कर रहा है, वो भी स्टैंडर्डाइजेशन और प्रोटोकॉल्स बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि फिरंगियों ने किया हुआ है। तो आयुर्वेद भी एलोपैथी का दूसरा भाई बना हुआ है आज के टाइम पे। बल्क ड्रग मैन्युफैक्चर आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर आज आयुर्वेद बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं। बड़े बड़े बहुत ज्यादा अमाउंट में ड्रग प्रोड्यूस दवाइयां बनाई जाती हैं, जिसकी एफिकेसी बहुत नीचे क्रैश हो जाती है। खराब सिचुएशन में आप बचे रहें, इसके लिए उपाय क्या है? चलो सभी को मैं छोटा कर देता हूं। खराब सिचुएशन में भी, क्योंकि आप सभी सिचुएशन ठीक नहीं कर सकते, खराब सिचुएशन में भी आप बचे रहें, इसके लिए क्या उपाय है? एक काम कीजिए, किसी को बोलिए आप खड़े हो जाइए, किसी को बोलिए कि आपको धक्का दे और आप अपने आप को बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, या एक पांव पे खड़े हो जाइए, बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। कैसे बनाते हैं बैलेंस? कंसंट्रेशन। मैं तो वैसा ही कर रही हूँ। नहीं, आप शरीर को देख ही नहीं रहे। नहीं, आप मैं सांस कहीं रोक और देख के, रही हूँ। सांस रोक के बैलेंस करते हैं अपने आप। करके देखिए ना, आपको पता चलेगा। तो आपकी कौन सी क्षमता कम हो गई है? बैलेंस में नहीं आ पा रहे ना, आपका शरीर वापस ठीक नहीं कर पा रहा अपने आप को, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रिकवरी। आपके शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ और आपके शरीर में बैलेंस क्रिएट करने की क्षमता दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। आप ऐसे इंसान को देखिए जिसको धक्का देंगे तो वो आपसे ज्यादा जोर लगा देंगे, उनके जीवन में बीमारियां कम है। वो किसी भी हालत में जी रहे हैं, वो जी रहे हैं। रेड लाइट पे जो भिखारी बच्चे भीख मांगते हैं, वो बारिश में धूप में भीख मांगते हैं। अच्छे परिवार के बच्चे जरा से बारिश होती है, बाहर निकलते हैं, सर्दी जुकाम हो जाती है, उनको कुछ भी नहीं होता। कौन सी चीज बचाएगी? आपकी रेजिलियंस, आपकी रिकवरी स्ट्रेंथ ही आपको बचा सकती है। आप सब कुछ ठीक नहीं कर सकते दुनिया में। तो आपने क्या खो दिया? बैलेंस में आने के लिए क्या खो दिया? आपने सांस रोकने की क्षमता आपकी कम हो गई है, यानी इम्यूनिटी कम हो गई है, यानी रिकवरी स्ट्रेंथ कम हो गया है। तो उसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा आपको। आप कहीं भी जाइए, आप इंश्योर नहीं कर सकते कि वो चीज बिल्कुल ऑथेंटिक आपको मिल रही। आप इस दुनिया में ही रह रहे हैं, आप हवा तो वही ले रहे हैं, और हवा में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं, वो जीने लायक हवा नहीं है। तो आपका शरीर तो कहीं ना कहीं, जितनी स्ट्रेंथ होगी, रिकवरी स्ट्रेंथ आपके बॉडी में, जितना शरीर आप अपने आप को बैलेंस में रख पाएगा, उतना ही बच पाएगा। ये बात आप मान के चलिए। तो यही हम करवा रहे हैं। हम कह रहे हैं आपकी रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ा दो। बाकी चीजें आप मैनेज नहीं कर सकते, मगर रिकवरी स्ट्रेंथ, बाकी चीजें जब जरूरत पड़े तो आप सपोर्ट ले सकते हैं, मगर उससे भी नुकसान होता है ना। आप बाहर से तो कुछ भी ले रहे हैं, इसका मतलब आप एडिक्ट ही हैं, ड्रग एडिक्ट ही हैं। चाहे आप हर्बल मेडिसिन लें, चाहे आप केमिकल मेडिसिन लें, चाहे आप व्हील चेयर पे चलें, चाहे आप बैसाखी लेके चलें, हैं तो सहारे के साथ ही जी रहे हैं। आपको तो आइडियली किसी भी मेडिकेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, अगर आपका रिकवरी स्ट्रेंथ, आपका बैलेंस, स्ट्रेंथ बैलेंस ऑन रिदम अगर आपके शरीर का ठीक हो, तो आपका शरीर वापस ठीक कर लेगा अपने आप को। लाखों सालों से कर रहा है। इसी को कहते हैं, रिदम को कहते हैं भाव, बैलेंस को कहते हैं राग, स्ट्रेंथ को कहते हैं ताल। तीनों को मिलाइए, क्या हुआ? भारत। भारत, आपके देश के नाम में ही हेल्थ है।
पर आप देख नहीं रहे, आप इधर देख नहीं रहे आप कहीं और देख रहे हैं, और सॉल्यूशन ना मिलने के बाद भी वहीं देख रहे हैं। तो अपने शरीर की तरफ देखिए, ये आपको ठीक कर देगा, मगर इसकी रिकवरी स्ट्रेंथ तो बढ़ाओ। जरूर, धन्यवाद। So we'll take up one last question. Rachana ji? Yeah. Any other question, if anybody would like to ask? I think no other questions, Swami ji. Then we'll close this session. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में आने के लिए। आप लोगों को अपने जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, एक सर स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर आ गए हैं, जैसे पेल्विक टिल्ट जिसको कहते हैं कि एक मतलब स्ट्रक्चरल में आपकी जांघें काम नहीं कर रही हैं और पेल्विक थोड़ी टिल्ट हो गई है, जिससे बॉडी बिल्कुल डिसबैलेंस हो गई है, उसमें भी ये इलाज काम करता है स्ट्रक्चरल हाँ, चेंजेस बैलेंस करने का देखो हमारा मेन मकसद है, जिसमें मैंने बताया 3 चीज सीखेंगे। जो हठ विन्यास वाला पार्ट है ना, इट इज टू अलाइन योर बॉडी, वो आपके शरीर को अलाइन करने के लिए ही है। तो अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आ गए हैं तो देयर इज एवरी चांस दैट अ पर्सन विल बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट चेंज, अनलेस एंड अनटिल इट इज लाइक अ कंप्लीट डैमेज। जब तक कंप्लीट डैमेज नहीं हुआ, इरिकवरेबल भी अगर वो स्टेटस में आ गया है, उसके बावजूद बहुत हेल्प मिल जाएगा। यू विल नॉट गेट इनटू डिफिकल्टी इन योर लाइफ, यू कैन एक्चुअली इंश्योर दैट। तो अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए हैं तो उसको बिल्कुल रिकवर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। स्ट्रक्चरल चेंज किस वजह से आए, कौन से वीक फैक्टर की वजह से आए हैं, उसको तो हम एनीवेज स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आपको इस पे अपने बॉडी पे काम करेंगे तो ये मैजिक, क्योंकि आपका शरीर मैजिक है, राइट, बट यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स दोस स्ट्रेंथ्स एंड फैक्टर्स ऑफ योर बॉडी। ये बिल्कुल उस पे काम करेगा। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और खूब 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 आशीर्वाद मेरी तरफ से। If you have any other question, you can put it in the chat box and we will answer your questions. Ashutosh sir, you can put it in the class group, in the webinar, sorry, in the webinar group, and we will answer your question. So we end the meeting here. Thank you so much and good night. Hello.